Welcome to all of you in our easy learning program. As you know, it is a program for those students who are weak, and it is also for those who are intelligent. But it is easy method. We use most probably the we can say easy method to teach you. I explain all the things related to the chapter very easily. कोशिश करते हैं हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने की, ताकि आप अपने समय का सही सदुपयोग कर सकें, यानी कि समय को यू कैन यूटिलाइज्ड प्रॉपरली. It is a very costly time for all of you, because you all are the student of 12th. It means it is your intermediate class of your life. Generally feel लोग कहते हैं कि ये मिडिल की एज है, इसमें अगर आप सफल हो गए तो आप सफल हो जाएंगे ज़िंदगी में. ये भी सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. कहते हैं जब आँख खुलती है तो सवेरा हो जाता है, तो वही सवेरा है. जब आपको समझ आए तभी आपका सवेरा है. ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपको तरक्की मिल सकती है अगर आप मेहनत करते रहें. मेहनत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है. आप मेहनत करिए और आगे बढ़िएगा. सो टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. यानी कि जब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो व्हाट हैपेंड. यानी कि आज हम आपको पढ़ाएंगे कि जब हम एक चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो व्हाट हैपेंड. सबसे पहले हम बताते हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे करते हैं. दिस दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. डॉट रिप्रेजेंटेशन. Right, this is also uniform magnetic field. Uniform magnetic field. And other representation is, this is nothing but it is perpendicular. Right, this is also uniform magnetic field. It means तो you will arise a question, जब सभी यूनिफॉर्म हैं तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन क्यों है. This is uniform magnetic field but parallel to the plane of पेपर. सपोज ये बोर्ड है तो बोर्ड के पैरेलल. ये आपकी टेबल है तो टेबल के पैरेलल. राइट, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स दिस. राइट, परपेंडिकुलर मीन्स दिस. दिस इज इनवर्ड. इनवर्ड मीन्स टूवर्ड्स यू. जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे खड़ा हूँ तो मेरी तरफ आ रही है ये फील्ड. एंड दिस इज गोइंग आउटवर्ड, यानी कि फ्रॉम अवे फ्रॉम यू. तो दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन. आउटवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज टूवर्ड्स यू. So this is nothing but are the representation of magnetic field. तो जनरली हम मैग्नेटिक फील्ड को इन तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं.
तो अगर आपकी सपोज ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, so this is inward but perpendicular to this, and कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आता है, whether it is a straight line or any way, so it will rotate in a form of circle. So definitely it will experience a centripetal force. Definitely it experiences a centripetal force. So I can say this, right? So what is the field direction? It is perpendicular. Suppose I represent by this, and this is nothing but this is the velocity. So what will be the direction of force? The direction of force is like this. This is always perpendicular, but it is nothing but it is towards center. So when a charged particle is placed in a uniform perpendicular magnetic field, it experiences a force. This can be represented by this, and this is the force. So this is direction of force. This is suppose velocity, and this is suppose magnetic field. All three are perpendicular. The variation of force depend on this angle. Like this Fleming left hand rule, thumb will show the direction of force, first finger will show the direction of magnetic field, and middle finger will show the direction of motion of the charged particle. So it means we can say when a charged particle is placed in a perpendicular uniform magnetic field like this, so when it come in a magnetic field, it experience a magnetic force, right? The direction of force is towards center. This is what called the centripetal force. इसका मतलब जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल in a perpendicular uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Magnetic field. Now I want to discuss here the force on a charged particle placed in a uniform magnetic field. जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही, तो लेट अस कंसीडर प्लस क्यू मूविंग चार्ज placed in a uniform perpendicular magnetic field. Intensity B. It experienced
a centripetal force. Centripetal force. So we can say what is a magnetic force? What is magnetic force? Magnetic force is maximum, so we can say this will be is equal to QVB, which is equal to centripetal force. This is centripetal force. We can say this is R, this is right. So suppose I consider here will be VR and here will be MV and here is a value of the charge. This is B. It means we can say the radius of the motion of charged particle in a magnetic field. If mass will be increased, so what happened? The radius of the circular path of the charged particle will also increase. If the velocity factor increase, it means I can say the radius is directly proportional to the mass, directly proportional to the V, but inversely proportional to the charge value. And the most important thing is it depends on the magnetic field. जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना ही मोशन का रेडियस जो होगा वो कम होगा. दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर regarding the circular motion of the charged particle. So these are the factors on which the radius of the charged particle is dependent. Suppose this is your mv square and this is nothing but this, I can say V is equal to, this is R QB upon M, right? What is the value of kinetic energy? Kinetic energy, the kinetic energy is equal to half mv square. So we can say this is half m r square q square b square upon m square. So this will be cancelled out. So kinetic energy will be equal to half r square q square b square by m. This is nothing but will be the kinetic energy related to the moving charge particle in a uniform magnetic field. So definitely there will be a certain angular velocity associated it. Angular velocity. आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लीनियर मोशन भी है यहाँ पर और सर्कुलर मोशन भी है. जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में काम करती है या मूव करती है तो वहाँ पर दोनों वेलोसिटी होती हैं. लीनियर वेलोसिटी भी होती है और सर्कुलर भी होती है. लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूसली सर्कुलर वेलोसिटी में चेंज होती रहती है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चेंज करता रहता है. सो वी कैन से ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर. और अभी अभी आपने निकाला है वी इज इक्वल टू आर क्यू बी
upon, I think, m, right? So omega can be written down as r q b r by m से m कैंसिल हो जाएगा. So this is equal to qb by m, right? So there will be certain time period. What is time period? Time period. It is a time period. It is a time taken to complete one motion. यानी कि one circular motion, and that is equal to t 2 pi by omega, because I know that omega is equal to 2 pi by t. So t that is equal to omega, this is 2 pi by m, and this is q by b. So definitely there will be a certain frequency associated it. So what is frequency? The frequency means होता है the number of oscillation या number of circular motion in a second. Yeah, it is reciprocal of time period. So I can say this is 1 by t. This is q by 2 pi m. Right? So this is what? This is nothing but motion of a charged particle in a uniform perpendicular magnetic field. So this is also very simple for all of you and generally asked in the examination point of से भी ये important है, and it is also a important concept of physics, right? So now I want to discuss a device. This is called cyclotron. It is a very important device to accelerate the charged particle. There is a two proper word are used in quantum physics या classical physics. एक होता है acceleration और एक होता है moderation, यानी कि moderate. जैसे न्यूक्लियर बम है, उसमें न्यूट्रॉन को मॉडरेट किया जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो किया जाता है. जब न्यूट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी वेलोसिटी पे आता है तो वो टूट जाता है. एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द न्यूट्रॉन दैट इज यूज्ड बाय absorbing of energy by the uranium, and it is split up into its constituents, and a tremendous amount of the heat is produced, that is called atom bomb या nuclear reaction. ऐसे ही हम अगर प्रोटॉन पार्टिकल ले लें या पॉजिटिव आयंस ले लें, उसको हम एक्सीलरेट करते हैं. एक्सीलरेट का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज करते हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड तक ले जाते हैं. ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर हम कर दें तो उसकी वेलोसिटी, उसकी जो रेडियस है वो कम हो जाती है. जैसे हम बुलेट को फायर करते हैं तो
जनरली हमें ऐसे लगता है कि बुलेट हमारी सीधी जाती है, बुलेट हमारी जो है इस तरह से स्पाइरल शेप लेके जाती है और वेरी फास्ट होती है। तो ऐसे ही अगर हम एक लंबी सी ट्यूब ले लें, राइट, इस ट्यूब को हम किसी तरह से यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दे दें और कहीं सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो जब इसके अंदर घुसेगा तो इट विल स्टार्ट टू रोटेट इन ए फॉर्म ऑफ सर्कल। तो इसी तरह से साइक्लोन भी हमारी डिवाइस है जो एक्सीलरेट करता है प्रोटॉन को। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस टू accelerate positive charge particle, positive charge particle। तो पॉजिटिव मीन्स हैवी चार्ज पार्टिकल। इसकी एक ड्रॉबैक है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होता है। पार्टिकल और लाइक एन हीलियम एटम ऑल्सो वी कैन से, लाइक हीलियम एटम, हीलियम एटम, right? Its drawback is cyclotron unable to accelerate electrons। Because its mass is smaller, because its mass is smaller than proton, right? This is very basic concept of cyclotron। तो cyclotron का क्या यूज है? एक्सीलरेट करना। और एक्सीलरेशन का मीनिंग क्वांटम फिजिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में एक ट्रिमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस करना है। जैसे ये आपका प्रोटॉन भाग आ रहा है, एक जैसे वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे आता है तो यहाँ पर एक ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज्ड करता है, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड in our scientific researches and scientific programs। So here acceleration means to change the velocity, right? Not, it doesn't produce an like in kinetic energy, it produces its own, it is means it is a characteristics of the nucleons। अगर न्यूट्रॉन को अगर आप स्लो डाउन कर देते हैं किसी भी तरीके से तो वहाँ पर एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसी तरह से अगर आप प्रोटॉन को हायर वेलोसिटी दे देते हैं तो वो एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। तो हम इस शेप में एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल हॉलो पाइप लेते हैं। दिस इज सिलेंड्रिकल बट इट शुड बी हॉलो। तो छोटा मोटा नहीं लेते, बहुत बड़ा पाइप लेते हैं, जैसे सीवर लाइंस के पाइप वगैरह हो सकते हैं, और उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक दिस।
So this is nothing but are the D's. इनका नाम दिया है, साइंटिफिक नाम इसको दिया गया है डी। क्या दिया है इसका साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम जो इसको दिया गया है वो डी दिया हुआ है। तो दिस इज D1 and this is D2. So we can say construction, it consists two D's which is connected with high oscillating circuit. Yeah, what do you mean by the high oscillating circuit? The meaning of high oscillating circuit का होता है जैसे आपके जनरली घर में जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो 220 वोल्ट होती है और 10 एम्पियर के लगभग, वैसे तो कहते हैं वो 0 से लेकर 20 एम्पियर तक करंट देती है, लेकिन जनरली गीज़र देखो 10 एम्पियर मैक्सिमम लेता है। तो 10 to 20 होती है आपके घर में, और जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है वो करीब 5 हर्ट्ज़ होती है। इसका मतलब 1 सेकंड में वो 50 बार पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। मीन्स it's oscillate like this because this is alternate current. It means sometime it is positive and sometime it is negative. So this circuit is connected to high oscillating circuit. So we can say here is a transformer. दिस इज़ द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होती हैं, एक सेकेंडरी होती है, एक प्राइमरी होती है। तो इसमें जब हम म्यूचुअल चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक करंट पैदा हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी यूज़ किया गया है हाई ऑसिलेटिंग सर्किट। अब हम यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रख देते हैं like an proton. Suppose for the moment it is positive and it is negative. What happened? This positive will be repelled by this and it means it will go in along this direction. Right? एकदम से मोमेंट होगा तो वो इसमें चेंज हो जाएगा। So there will be a certain kind of the linear motion is provided by the electric field. यानी कि यहाँ पर जो चार्ज को मोशन दिया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से दिया जाता है। Okay, I think there is no problem for you, and this whole system is placed in a uniform magnetic field like this. What happened? जैसे इसमें लीनियर मोशन आएगा, ये मूव करेगा तो here will be a circular motion. So it is a motion of charge particle. चार्ज पार्टिकल एक सर्किल में मूव करने लगेगा. It means the magnetic field will be equal to the centripetal force. So we can say here Q VB is equal to mv square by r. So here I can say V cancel हो जाएगा तो V is equal to R QB by
m. Right? Or I can say R will be is equal to V m QB. This is also write down here. Both have the same. It means जब हम एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट रोटेट इन ए फॉर्म ऑफ सर्किल. इट मीन्स here is a magnetic force is equal to the centripetal force, right? The velocity value will be this. So it means under the influence of the strong magnetic field here the circle path of the ions or charge particle will reduced, but there is certain thing is different. As there is a motion of the charge particle, जैसे ये इसके अंदर आता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस्ड नहीं करती, क्योंकि जो चार्ज रिजाइड करता है वो आउटर सरफेस में होता है. तो ये इसके अंदर एक सेमी सर्कुलर पाथ ले लेता है. ठीक है. तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? The time period can be write down as time period is the time taken, you know it's well. This is, I can say, represented by this. It means this is semicircular path. Semicircular path upon velocity. It means this is nothing but is the distance traveled. This is half of 2 pi r. This is velocity vector. This is v, right? If I put the value of this in this equation, so we can say this is equal to VB pi r upon Vm. So this will be cancel out and here is Q. So what will be the time period? Time period will be is equal to QB. So what will be the frequency? The frequency will be is equal to, so it is different general motion of the charge particle and the difference in a cyclotron, right? So this is nothing but it is your device known as cyclotron. So similarly there will be a certain kinetic energy associated with this. The kinetic energy is equal to half mv square. This is equal to half m r square q square v square by m square. So this is cancel out. So we can say kinetic energy associated with each charge will be is equal to this. So this is nothing but it is your cyclotron. So what is a cyclotron? The cyclotron is nothing but it is a device to accelerate the charge particle. So this is very simple and this is very basic for all of you.
So many questions may be asked regarding it, and the both questions are very important. So I want to again discuss certain important point related to the magnetic effect. It means there is a 3 lecture I have completed. In first lecture I have discussed nothing but I have explained that certain value of the current passes, so it is surrounded by the magnetic field. If the direction of current is changed, the direction of magnetic field will also change. It affect of करंट यानी कि करंट के द्वारा हम एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. It is first studied by the rest and later on it is studied by the Maxwell. The direction is given by the Maxwell here, but it is a study by the Biot-Savart. So Biot-Savart says nothing but when certain value of current passes through a conductor, so it directly proportional to the dl element, and it depend also on a distance. If I am interested to find out at a point P, so the magnetic field produced by this is I, and this is 4 pi, right, and this is equal to sin theta, and this is equal to dl by r square. So I integrated, this is b and this is, so this is nothing but is a Biot-Savart law, which I have discussed in our previous lecture. It is nothing but I am just discussing for the summary of the chapter is here. यानी कि एक तरह से हम आपको समरी बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. फिर हमने इसमें निकाला मैग्नेटिक फील्ड B due to circular coil. This is B is equal to, this is mu 0 n by 2r. If there is a n number of turns, so I write down it is n number of turns, right? This is the another article I have studied here. Then I explain due to long wire, so this is not in your syllabus, so direct I have write down a formula. This is D, right? So again I have asked, here is a problem, how you will find out a magnetic field intensity due to circular coil on its axis. This ये आपने force on a current carrying conductor पढ़ा. The force on a current carrying conductor, force on a current carrying conductor, which is F is equal to ILB sin theta. हमने फिर इसमें 2 केसेस डिस्कस किए. थीटा इज इक्वल टू 0, तो F इज इक्वल टू 0, theta is equal to 90, so it is equal to maximum, right? Then I have discussed here the force between the 2 parallel wire, and this expression is equal to mu 0 by 2 pi, or I can say
directly this is 10 to the power minus 7 I1 I2 by R square, and I have discussed about uh, the 1 ampere definition also. It means the force experience is equal to this, then current flow through will be 1 ampere if the distance between them is 1 meter, that is R, right? So these are the things I have studied in this chapter. So this was the briefing of this magnetic effect of current. Okay, so I think it is not a typical problem for all of you. You will definitely understand here all the things related to the magnetic forces. So you are studying well, I think, I hope that, and thank you very much for your today's concentration and cooperation. Thank you very much for this today's lecture.